सो हाई ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन जेम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि एक हॉल वीडियो होने वाला है जो कि मिस्टर DIY से है। एंड लेट मी टेल यू गाइस दैट वी हैव बॉट अ न्यू हाउस। ऑब्वियसली फॉर डेकोरेटिंग दैट आई बॉट ऑल दिस थिंग्स अराउंड मी एंड आई एम super excited to show you all these things. So without any further ado, let's just get into the video. So first thing that I bought is this cute little diary having a cute little stickers on this and the compact size of this diary making perfect for carrying it in bag and backpack, so I can jot down my thoughts and ideas in it whenever or wherever I go. So yeah, just perfect thing that I bought from there, and I just got it for 83 rupees. Can you guys just believe this cute little diary I got just for 83 rupees, and you guys can also get it from Mr. DIY stores. So yeah, you must give it a try. So next thing that I bought is this frame having a very minimalist design of cactus on it and with a fine lining, and you know, as you guys can see, it's made of very sturdy and slicky material and which is giving a very aesthetical vibe. And yeah, this white backdrop giving that pop-up wala vibe to this cactus. So obviously it is looking very aesthetic and I am very excited to decorate in my wall, and I bought this for 290 and I don't think so it is much for this, right? Then again I bought one more frame, a combination of off-white and woody green texture. But I'll paste something cute over this wallpaper because I am not liking it much. That's why I paste something cute in it. Otherwise I will paste my photo only. So yeah, let's just see कि मैं क्या experiment करती हूँ इसके साथ. And yeah, I bought this for 99 rupees. So next up that I bought is this white vase, and this is with a blank canvas allowing a, you know, vibrant color flowers or plants to stand out in it and still the spotlight of any corner wherever I put this. So yeah, it's just perfect. I bought this for 85 rupees, and yeah. And then I bought this lamp, cute little lamp. आप बिलीव नहीं करोगे गाइस कि मेरे पूरे रूम में ना लाइट ही लाइट है, कोई कमी नहीं लाइट की. स्टिल आई वॉट दिस फॉर गिविंग अ गुड एम्बियंस टू माई रूम. जब भी मैं अपने रूम की सारी लाइट्स बंद कर दूँ तो एटलीस्ट ये एक छोटा सा लाइट रहे जो यू नो एक अच्छा सा एम्बियंस और वाइब दे मुझे. एंड दैट्स द रीज़न आई बॉट दिस लैम्प विथ अ वुडी बेस. I bought this for 1080 rupees. एंड देन ये मिस्टर DIY वाला जेल जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेने के लिए. एंड ऑब्वियसली गाइस the you know it just adds a very delightful and kind of a divine aroma to your space. So obviously you have to get this kind of, it is very flow, and I bought this for 155 rupees. So yeah, फिर आता है ये ऑर्गेनाइजिंग सेट विद 3 डिफरेंट पेस्टल कलर्स. इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ, लाइक एसेसरीज और मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कुछ भी रख सकती हूँ. इसके लिए परफेक्ट है. आई बॉट दिस फॉर 630 रुपीज़. अगेन थोड़ा महंगा वाला परचेस. मुझे मतलब हर सैटरडे संडे से आदत है ना, मैं जैसे ही उठती हूँ फ्रेश होती हूँ, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ और मैं अपने रूम को क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ. मतलब एज सुन एज आई वेकअप स्टार्ट हो जाती है कि मुझे ये क्लीन करना है, मुझे ऐसे करना है वैसे करना है. तो बस वो रहता है मेरे माइंड में, और इसलिए मुझे ये माइक्रोफाइबर टॉयल्स की बहुत ज़रूरत थी. तो बस मैंने यही ले ली है. 2 डिफरेंट कलर में है, पिंक और एक लाइट ब्राउनिश कलर में है. तो ये मुझे मिले फॉर 95 रुपीज़ एंड दैट्स द रीज़न. फिर मैंने लिया ये लैवेंडर वाला मग. अलग ही ऑब्सेशन बन गया है, यू नो, लैवेंडर कलर के साथ. तो लैवेंडर वाइट
मग वगैरह था, बट मुझे बस ये कलर पसंद आ गया और प्राइस भी इतना कोई ज़्यादा था नहीं, 78 रुपीज़ का है सिर्फ। सो आई वाज लेके ले लेते हैं, ले लिया ऐसे ही। एंड फिर मैंने लिया ये टॉवल, इसका लेंथ भी बहुत अच्छा है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने बस ले लिया। और ये जस्ट फॉर 370 रुपीज़ है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वॉल, that's it for this video. If you guys like this video, please do like, share and subscribe, and don't forget to share this video with your friends, and comment down below if you have any suggestion for me. And yeah, let's just meet in the next video super soon. And